अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर जाएंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे। हमने सीखा है कि फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए कि 3/5 को परसेंटेज में बदलिए, सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड सिंप्लीफाई। 5 2 जा 10, 20, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100. You can even divide 100 by 5, answer will be 20. And 3 multiplied by 20 is 60. So when we simplified it, answer comes 60%. इसका मतलब है कि जब हमें फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर हमें परसेंटेज दिया हो, मान लीजिए 50% दिया है, 75% दिया है, 35% दिया, कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी है, उसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है, उल्टा करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, 100 का मल्टीप्लाई किया था, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हमने 100 से डिवाइड किया, क्योंकि हमेशा 100 के अगेंस्ट में ही परसेंटेज वैल्यू होती। 50% का मतलब है कि ये होल वैल्यू, होल नंबर इज़ 100 एंड दिस वैल्यू इज़ 50, हैंस 50/100 इज़ द परसेंटेज वैल्यू, 50/100 इज़ द फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 50 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज वैल्यू इज़ 50% बिकॉज 50 इज़ अगेंस्ट 100। अगर टोटल वैल्यू 100 है और उसके अगेंस्ट में हमें इतनी वैल्यू 50 है तो ये 50% है। आगे बढ़ते हैं तो हमने ये सीखा कि जब कोई वैल्यू 100 होती है तो उसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो 50 होती है। अभी क्या होता है कि ये मान लीजिए होल वैल्यू, किसी चीज़ की होल वैल्यू y है। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। इट कैन बी सर्कल, सर्कल कैन बी होल, इट कैन बी अ ड्रम और टैंक लाइक दिस। सो विल से कि दिस एंटायर circular area is 100. Let's say this complete area we can say y. This total area is y. Here we can say the tank, the entire tank if filled with water or oil or anything, this entire value is y. The whole value of anything, whether it is a rectangle or a tank or drum or a circle or even a football which has a volume inside it, is y. Total value is y always. And just we can call it x also, m also. Now we are calling this total value as y, and against this we have some fraction of that value, some portion of that value. So let's say this portion is x. So if we have to calculate what is the percentage, so in order to calculate percentage, x should be divided by y. X is this value, total whole value is y, because we have to bring the answer how much is x against y. So x divided by y multiplied by 100 is your percentage value when we solve it. Now what is y and x? Y and x are actual values of that thing. Y is actual value or absolute value we can call it. X is also absolute value. But in percentage, what is this? This is a percentage value which we just calculated. How much is x against y? That is x divided by y multiplied by 100, that is a percentage value. So this is a formula, but how this formula is derived? This formula is derived from this diagram. A total value is y, a portion of that value is x. So how much is the percentage? X divided by y multiplied by 100. So based on this formula, on which is based on this diagram, we can solve many questions. Earlier also we have used the same diagram to calculate the fractional value. So let's say 50 is
your value, this value out of total value 100. What is the fractional value? 50% की fractional value कितनी? 50 divided by 100 is the fractional value which we have done here. 50%, अगर percentage को fraction में convert करना है, 50 is x, 100 is y, x divided by y is your fractional value. Now coming again to our question set, and let's find some questions which we will solve using this formula. So let's see. So we will take few questions. Just a second, let me turn the page. Let's take the question number 24. It looks like that it fits well in the formula or the diagram I have just made earlier. Yes, in a school there are 1200 students. How many students are there in a school? Which means this is a total number of students. When they say in a school there are 1200 students, so we are just saying that total number of students are 1200. The percentage of boys in a school is 60%. So let's say 60% are boys. Then find the number of girls. So we will just make a diagram. So let's say this total is a number of students. Total is a whole number. So 1200 is a whole number. So this 1200 represent y as per our sample diagram. Just see there. Whenever what is the total? That is y. We consider that as a y. So this total is y and this value of y is x. 1200 is an absolute value, not a percentage value, not a fractional value. And inside that 1200, this is x. X is a number of boys. So if number of boys in the school is x, total number of students are 1200. Question is asked, what is the number of girls? So let's first put the formula. Let's calculate the x, which is number of boys. So 60% are number of boys. So what is our formula? X, absolute value of x or actual value of x, which means number of boys, divide by y multiplied by 100 equal to percentage value. So what is x here? X is not known, let it be x. What is y here? 1200 multiplied by 100. Percentage is known. How much percentage is this number of boys? These number of boys are 60%. So let's calculate x. X is number of boys, actual value of number of boys. Percentage value is known for number of boys, but actual value is not known. Out of 1200 total students, how many boys are there? That is what we are calculating. So and putting in this formula, x by y is the whole number, x is the number of boys multiplied by 100 equal to percentage value. X is not known, we have to calculate. Y is known, total number of whole number is known, 1200 multiplied by 100 equal to 60%. So when we calculate this, 1200 will go here. If 1200 is in division, it will be multiplied, and 100 will also go here because we want x at one side, all other numbers on other side, but bit 100 is in multiplication, so 100 will be going in division. So let's calculate this, which is your 60 divided by 100 multiplied by
1200. Let's simplify these 2 0 and these 2 0 will get cut. 12 6 ja, 6 2 ja, 12 6 1 ja 6 and 1 carry over 7 7 72. 1 0 is left, this 0 is there, which means the total x value is 720. Total number of boys in a school is 720. So what is the number of girls? Question is not about number of boys, question is asking number of girls, which is 1200 total number of student minus 720. Hence whatever is answer while doing the minus is the answer. 1200 is the total number of student. अगर हम उसमें से नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 में 0, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 480 is total number of girls and this is the answer. So let's see, is there any option? This 480, is there any option like that given in 24? Question number 24, yes, the B is the answer, 480. Let's take another question, 25. Question number 25 we will be taking to understand it in a much better way. 25. A garden has 2000 trees. 12% are mango trees, 18% are lemon and the rest are orange trees. Find the number of orange trees. So what they are saying that there is a garden and garden has 2000 trees, which means total number of trees in a garden is 2000. That is the maximum number of trees. Out of 2000 we have 12% as mango trees. So we have to understand that 12% trees are mango trees. Then we have 18% lemon trees, which means 18% is lemon trees and rest percentage is mango tree. One diagram. So this is the diagram I have already made. The question says we have total number of trees कितने हैं 2000. 12% are, out of that 12% are mango tree. So this is mango tree. 18% are lemon tree, right? 18% are lemon tree and rest are oranges. Find the number of oranges. So what we will do, we can calculate with the same formula. What was the formula? X by y multiplied by 100 is equal to percentage. So if I have to calculate the number of mangoes, x is not known for mangoes. Let's say this is x1. x1 divided by 2000 multiplied by 100 equal to 12%. Then we will get the number of mangoes. If we have to calculate the number of lemons, so we have to say x2. Let's consider this as x2. So x2 divided by 2000 multiplied by 100 equal to 18%. If we solve that, that will be number of lemon. But what we need to calculate, what the question is asking, number of oranges. So here we will make one trick, because we know in percentage term this is 100, this cannot go beyond 100. In absolute value it is 2000, the whole number is 2000, but in percentage this is 100. So in percentage, if mango is 12, lemon is 18, let's
add 12 plus 18. If you add this 8 and 2 and 8 10, 1 1 2 30. So all put together, mango and lemon together, it is 30%. So orange will be, percentage of orange will be, total is how much in percentage term, how much is total percentage? This total is 100% and mango plus lemon is 30%. So how much percentage is orange? 100 minus 30. So orange is 70%. So this value of percentage is 70%. So what is the x, actual x for orange? So we will say x formula, we will apply the formula on orange. Orange, we assume this is x, and what is this? This is 2000 is y, whole number is always y. So let's put the formula for orange. X divided by y into 100 is equal to percentage. This is our formula. X is not known, actual value of oranges are not known, लेकिन टोटल, जो टोटल है होल नंबर y इज़ नोन, तो x को ऐसे ही रख देंगे, इसको 2000 रखेंगे y को, और परसेंटेज हमें पता चला है 17. कैसे पता चला है? टोटल 100 होता है, माइनस 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 30 था, तो 100 माइनस 30 70%. तो परसेंट पता है हमको ऑरेंज का, तो y भी पता है 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 70% है ये. तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं सेम चीज़ को. x डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 70. तो ये जो 2000 नीचे, x को एक तरफ रखेंगे, x को इधर रखेंगे, बाकी सब नंबर उधर ले जाएंगे. तो इस 2000 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 100 को ले जाएंगे इधर तो डिवाइड होगा. जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है इधर जाएगी, इक्वल टू के इधर जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी. जो चीज़ डिवाइड में है इक्वल टू के इधर जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी. तो x इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाई 2000 डिवाइड बाई 100. इससे ये कटाओ, इससे ये कटाओ, तो नीचे कुछ नहीं बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है. 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14, और कितने ज़ीरो बचे हैं? एक ज़ीरो यहाँ बचा है, एक ज़ीरो यहाँ बचा है, दोनों ज़ीरो लगा दो, और यही x क्या था? नंबर ऑफ ऑरेंजेस. यही आंसर होना चाहिए. चलिए हम लोग देखते हैं जा कर के उसमें कि ये आंसर है कि नहीं है. 1 सेकेंड में देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 1400 है कहीं पे, ए में है 1400, और हमारा आंसर क्या था? 1400. तो यही है नंबर ऑफ ऑरेंजेस. तो ये तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लगाया. क्या होगा क्वेश्चन में? देखिए अब थोड़ा रिवीजन करते हैं. आपके 2-3 चीज़ें होंगी. y होगा होल नंबर, ठीक है, x होगा उसका पार्ट कितना पोर्शन है, और परसेंटेज होगा वो x कितना परसेंटेज है. और हमेशा या तो x और y दिया रहेगा, परसेंटेज पूछेगा, या फिर x दिया रहेगा उसका कितना पार्ट है, पोर्शन है, और उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, या होल नंबर पूछेगा. यही 3 चीज़ों में घुमाना है उसको. या फिर x को 2-3 पार्ट में बांट देगा, x1 x2, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसको दोनों को जोड़ लें तो टोटल x पता चल जाएगा. और उसके बाद आपको फार्मूला लगाना है, x बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू. तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक डायग्राम से हो जाएगा. अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो डायग्राम दिमाग में बन जाएगा कि अच्छा ये x इसमें x ये है, y ये है, x यहाँ रखो, y यहाँ रखो, 100 करो, परसेंटेज भी दिया हुआ है, आंसर निकालो. तो डायग्राम इज़ जस्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, बट स्लोली इट विल बिकम योर मेंटल मैथ, वेयर डायग्राम विल बी you will be able to
build the diagram in your mind very quickly and bring the answers.